Hello students, I'm Nabila Tariq. Today we'll be discussing the chapter that is Sound of Music, second part that is about Bismillah Khan. In the first part we had learnt about Eveline Glennie, how she courageously fought with her physical disability and became successful. In this chapter we'll study about Bismillah Khan and his success. Okay, moving forward to the chapter, paragraph number 1. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Okay, Emperor Aurangzeb, who was a Mughal emperor, in his royal residence, that means in his palace, an instrument used to be played that was called pungi. But because that instrument used to present unpleasant and shrill sound, the sound that did not seem to be melodious, that kind of a sound that instrument, that is pungi, used to produce, therefore Aurangzeb banned the playing of pungi in his palace. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Now, pungi became the generic name. Generic name means a name given to a class or group as a whole. All the instruments, all the reeded instruments like flute, clarinet, जैसे बांसुरी होती है, ये सारे reeded instruments होते हैं जिनमें एयर के पास होने से नॉइस प्रोड्यूस होती है या मेलोडी प्रोड्यूस होती है. उन सब तरह के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको पुंगी नाम दिया गया था उस टाइम पे. Few had thought it would one day be revived. Now all those people who used to play pungi in the royal residence, they all hoped, उन्होंने होप किया कि कभी आने वाले किसी टाइम में हो सकता है पुंगी और या पुंगी जैसे और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका बजाना, उनका फिर से रॉयल पैलेस में उनका एक्सेप्टेंस हो जाए. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. Now there was a barber means nai. He had access to the royal palace. He used to go in the royal palace, and therefore he decided to improve the tonal quality of pungi. And the barber thought that he will improve the quality of the pungi. The reason by which pungi never used to produce a melodious song, he will improvise on that and he will make pungi a melodious instrument. He chose a pipe with natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. Now what changes he made? He took a very natural hollow stem. He took a pipe which was hollow from inside and it was more longer and broader than the pungi, and he made 7 holes on the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. Now when he kept his fingers on the holes and he opened one hole, then he closed the other hole, then again he opened one hole and he closed the other hole, like this sound was produced, and that sound was quite melodious. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. Now he brought this instrument, this new and improvised instrument, which was a little broader and longer than pungi. He brought the instrument in the royal palace, because वो royal palace अक्सर आया जाया करता था. So वो royal palace में उस instrument को लेके आया और उसने वहाँ पे जितने भी royal members बैठे थे family के और palace के, उनके सामने उसने वो instrument बजाया. The instrument, so different from pungi, had to be given a new name. Now जब सबने वो उसकी आवाज़ सुनी उस इंस्ट्रूमेंट की तो सबको वो बहुत अच्छा लगा. अब क्योंकि इंस्ट्रूमेंट देखने में भी बहुत डिफरेंट था, जैसे इमेज में दिया है, पुंगी जो पुराना वाला इंस्ट्रूमेंट था उससे जो शहनाई है, ये जो नया इंस्ट्रूमेंट है, ये काफ़ी डिफरेंट है देखने में. सो ऑफ कोर्स अ न्यू नेम वॉज टू बी गिवन टू द इंस्ट्रूमेंट. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज प्लेड इन द शाह चेम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, दैट इज़ बाबर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई. नाउ इस इंस्ट्रूमेंट को शहनाई नाम कैसे मिला? क्योंकि सबसे पहले वो शाह के चेम्बर, औरंगज़ेब जो शाह बोलते थे उन लोगों को, उन राजा महाराजाओं को उस टाइम पे, मुग़ल एम्परर्स को, बिकॉज वो शाह के चेम्बर में सबसे पहले बजा था. और किसने बजाया था? नाई ने, हु वॉज अ बाबर. देयरफॉर द इंस्ट्रूमेंट्स नेम वॉज केप्ट शहनाई. Come to the second paragraph.
The sound of the Shehnai began to be considered auspicious. Now, this sound was so loved and liked by everyone over there that this sound started to be considered as ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस मीन्स शुभ, जो हमें लगता है एक ऐसी चीज़ जो अच्छा गुड फॉर्च्यून लेके आती है, गुड विल लेके आती है हमारी लाइफ में, उसको बोलते हैं शुभ या इंग्लिश में ऑस्पिशियस. जैसे शादियाँ, कोई सेरेमनीज़, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, टेम्पल में जो जिसे कहते हैं ना अपने त्यौहार होते हैं, इन सब में जो ये शहनाई सबसे ज़्यादा बजने लगी. And for this reason, it is still played in temples and it is an indispensable component of any North Indian wedding. Mostly North India में शहनाई बजती है and it is a very, you may say, important part of an Indian wedding and it is actually played in temples. In the past, the shehnai was part of the Naubat or traditional assemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. उस टाइम पे शहनाई ज़्यादातर सिर्फ पैलेसेस में बजती थी और पैलेसेस में और भी जितने इंस्ट्रूमेंट्स बजते थे उनके साथ बजती थी, या ट्रेडिशनली टेम्पल्स में बजती थी, या किसी भी फंक्शन, सेरेमनीज़, शादी, ऐसे ऑस्पिशियस फंक्शंस में शहनाई मोस्टली बजती थी. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. But Shehnai was never played on the classical stage. कभी भी nationally या internationally शहनाई को किसी भी concert या program में नहीं बजाया गया. It was only played internally in temple, palaces or in the weddings or functions and ceremonies. But the person who brought Shehnai to the classical stage, that person's name was Ustad Bismillah Khan. Now, come to paragraph number 3. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Damrao in Bihar. Now, Bismillah Khan belonged to which place? Bihar. In Bihar, he used to play in Damrao. He used to stay in Damrao. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. Now, when he was 5 years old, he used to go to Bihariji temple and he used to sing Bhojpuri Chaita, a religious hymn over there. He used to play in the temple, and what as a reward he used to get? He used to get a big laddu which used to weigh 1.25 kg as a prize by the local Maharaja. That what does this paragraph means? That means Bismillah Khan had interest in the very starting of his life. As a child, he had great interest in music. This happened 80 years ago. A little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. Now, एक 5 साल का लड़का जो गिल्ली डंडा खेलता था या पास में एक टेम्पल में वो रिलीजियस हिम गाता था और उसको वहाँ के लोकल महाराजा लड्डू दे के उसको अवार्ड के नाम पे, उसको रिवॉर्ड के नाम पे उसको लड्डू देते थे. 80 इयर्स के बाद उसने पूरी दुनिया घूमी और उसके बाद उसे क्या रिवॉर्ड मिला? भारत रत्न, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. सो वी विल स्टडी अबाउट हिज जर्नी फ्रॉम अ लड्डू टू भारत रत्न. Come to paragraph number 4. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. Now, Bismillah Khan was born on 21 March 1916 and his family, in his family, everyone had great interest in music and they were particularly musicians and they were from Bihar. His grandfather Rasool Baksh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur's king court. Now his grandfather, whose name was Rasool Baksh, he was the Shehnai Nawaz, means he used to play Shehnai in the Bhojpur king's court. Bhojpur के जो king थे उनके court में, उनके palace में वो शहनाई बजाते थे. His father, Paighambar Baksh, and other paternal ancestors were also great Shehnai players. उनके father और paternal ancestors, paternal means father के side के जितने भी उनके और relatives थे, uncles थे, they all used to play Shehnai. Come to paragraph 5. The young boy took to music early in life. At an age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, which is now called Banarsi,
Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. Now, whenever his mother used to take him to his maternal relative's house, that means जब भी उनकी mother उसको अपने घर ले जाती थी, मतलब अपनी नानी के घर जाता था बनारस में, वहाँ वो अपने uncles को देखता था कि वो शहनाई बजाने की practice करते थे. And he used to get fascinated and excited seeing all this. He used to get very excited और वहीं से उसने शहनाई सीखना शुरू करी. Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Now अली बख्श जो थे उनके अंकल वो वहाँ पे शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान उनको देखते कैप्टिवेटेड मीन्स बिल्कुल खो जाते थे उसको शहनाई बजाते देखते. एंड ही यूज्ड टू लर्न. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उनको लेसन्स मिलने लगे, वो शहनाई सीखने लगे वहाँ अपने रिलेटिव्स से. एंड थ्रू आउट द डे ही यूज्ड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. Now, इस लाइन में 3 difficult words हैं. Okay? एक apprentice, एक solitude और एक haunts. Now, the first word that I will tell you is apprentice. Apprentice का मतलब होता है किसी trained इंसान से टीचिंग्स लेना, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो किसी भी एक ट्रेड में, उससे जब हम कोई चीज़ सीखते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी और उसके बदले में हम एक अमाउंट शेयर करते हैं, तो वहाँ हम उस चीज़ को हम बोलते हैं एप्रेंटाइज. मतलब हम उसके एप्रेंटाइज हैं, मतलब हम उससे कुछ सीख रहे हैं. एंड सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन और हॉन्ट्स मीन्स किसी भी जगह के आसपास बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल अटैच कर लेना. ओके, सो वेर ही यूज़ टू लर्न म्यूज़िक, और वो या फिर वो कौन सा ट्रेंड इंसान था जिससे वो सबसे ज़्यादा म्यूज़िक सीखता था, वो थी मंगला मैया एंड बालाजी मंदिर, और जब वहाँ पे जहाँ पे गंगा रिवर बहती थी. ही यूज़ टू सिट एट द बैंक ऑफ द रिवर गंगा एंड ही यूज़ टू वॉच द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा. गंगा में जो नहरें जाती थी उन लहरों को वो देखता था. उस टेम्पल के उन दोनों टेम्पल्स के पास बैठता था और उन टेम्पल से, उस बहते हुए पानी से ही लर्नड हाउ टू प्ले डिफरेंट राग्स आउट ऑफ हिज शहनाई. So the temples and the river Ganga was his teachers, and over there he used to practice in solitude. Solitude means he used to practice in loneliness, अकेलेपन में वहाँ वो practice करता था. The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. Now, the flowing water of Ganga taught him how to invent different ragas, how to improve the tonal rags of the Shehnai, and Bismillah Khan came up with so different composed rags which was very difficult for other people to produce through Shehnai. Come to paragraph 6. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." Now, जब वो 14 years के थे, वो अपने अंकल के साथ गए इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में. वहाँ पे एक फेमस म्यूजिशियन उस्ताद फयाज़ खान ने उनसे बोला that if you will work hard, you will reach the top. Now, exactly ऐसा ही हुआ. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. सबसे पहला ब्रेक मिला बिस्मिल्लाह खान को जब ऑल इंडिया रेडियो लॉन्च हुआ और वहाँ पे उन्होंने अपने परफॉर्मेंस दिए रेडियो पर. He soon became an often heard Shehnai player on radio. Now his program, his Shehnai was so loved by people कि सबसे ज़्यादा उनका ही शो सुना जाता था रेडियो पर. Now paragraph 7th. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. Now students, this paragraph number 6th and 7th is quite important. Now,
When India gained independence in 1947, over there, and when at the Red Fort, many national leaders like Jawaharlal Nehru and other famous leaders were present, that time Bismillah Khan was the first person to start the independent India's first function with his शहनाई. मीन्स उनको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स के सामने इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहली बार रेड फोर्ट में राग काफ़ी वो टोन है जो राग है जो शहनाई से निकलता है, उसको उन्होंने वहाँ बजाया. और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस स्पीच दी, हुज नेम वॉज ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी. नाउ कम टू पैराग्राफ नंबर 8. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Now, Bismillah Khan ने बहुत सारे memorable performances दिए इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी. The first international trip was to Afghanistan that he made, जहाँ पे किंग ज़ाहिर ख़ान उनके परफॉर्मेंस से, उनके शहनाई बजाने की जो मास्टरी थी उससे इतने ज़्यादा खुश हो गए कि उन्होंने उन्हें पर्शियन कारपेट दी. नाउ Persian carpets are considered to be very expensive carpets. They are very expensive. तो उन्होंने वो priceless Persian carpet उन्हें gift दी और बहुत सारे और भी souvenirs. Souvenirs are actually things or gifts that are given to people in the memory of a place, person or event. मतलब एक ऐसी चीज़ जो हम किसी की याद में, memory में देते हैं, उसे बोलते हैं souvenirs. So he was gifted Persian carpets in Afghanistan as well as other souvenirs. The king of Afghanistan was not only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. Now, अफ़गानिस्तान के किंग के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने शहनाई बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को बहुत ज़्यादा पसंद किया. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने अपनी एक मूवी बनाई उनके इंस्ट्रूमेंट के नाम पे, शहनाई के नाम पे, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई. और उस मूवी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस सॉन्ग था दिल का खिलौना टूट गया, विच वॉज कंपोज्ड बाय बिस्मिल्लाह खान एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर. The film was a hit and one of the Bismillah Khan's compositions, Dil Ka Khilona Toot Gaya, turned out to be the nationwide chartbuster. So the movie was also hit and the song which was composed by Bismillah Khan also became a very successful song. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in the film music were limited to two. Now, बिस्मिल्लाह खान बिकेम वेरी फेमस बिकॉज वो मूवी भी हिट हो गई और उनका कंपोज किया हुआ जो सॉन्ग था वो भी हिट हो गया. बट इन दिस सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, सेल्यूलॉइड मीन्स ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स. पुराने तरीका, जब हम मूवीज़, जैसे आजकल हम बॉलीवुड बोलते हैं, मूवी इंडस्ट्री बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, पहले मूवी इंडस्ट्री को बोला जाता था सेल्यूलॉइड वर्ल्ड. बिस्मिल्लाह खान इतने फेमस थे, उसके बाद भी सेल्यूलॉइड वर्ल्ड में उनकी सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट्स रिलीज़ हुए. वन वॉज अ कनाडा फिल्म, अ कनाडा वेंचर, एंड वन वॉज द विजय भट्ट डायरेक्टेड मूवी. ओके, नाउ बिस्मिल्लाह, वाई वॉज दिस, वाई ही डिडंट टेक एनी अदर प्रोजेक्ट. उन्होंने और कोई सा प्रोजेक्ट इसलिए नहीं लिया बिकॉज बिस्मिल्लाह खान वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन. ही डिड नॉट लाइक द आर्टिफिशियल वर्ल्ड, ही डिड नॉट लाइक द ग्लैमरस वर्ल्ड ऑफ द मूवी इंडस्ट्री. दैट वॉज द रीज़न कि उन्होंने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स लिए और उसके बाद इन्होंने मूवी इंडस्ट्री में कोई काम नहीं किया. ओके, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to 2, Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Sanadi Apanna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. Emphasis means किसी बात पे जोर देना. उन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया इस बात पे कि उन्हें आर्टिफिशियल वर्ल्ड और ग्लैमरस वर्ल्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, and that was the reason he only took up 2 projects in the movie industry. Now come to paragraph 9th. Awards and recognition came thick and fast.
Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. Now, Bismillah Khan got many awards and a lot of popularity, recognition. People started recognizing him all over the world, and he was the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. Now, अब ये वो सारी जगहें हैं जहाँ पे बिस्मिल्लाह खान को अपॉर्चुनिटी मिली परफॉर्म करने की, उनको इनवाइट किया गया. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosque Ustad Bismillah Khan. Internationally इतने ज़्यादा फेमस हो गए वो लोग बिस्मिल्लाह खान कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम बना उनके नाम पे, whose name was Tahar Mosque Ustad Bismillah Khan. Come to paragraph 10. This is important. National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred to him. उनको national awards जैसे Padma Shri, Padma Bhushan और Padma Vibhushan भी मिले, which was a very big mark for any individual at that time especially. Now come to paragraph 11th. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, Bharat Ratna. That was the highest award an Indian, a civilian, could get. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." Now, after all his desires coming true, his dreams coming true, whatever he wanted, he got. After getting all these awards, rewards and recognition, his eyes used to glint. Glint means चमकती थी उनकी आँखें खुशी के साथ. और उनका एक ही कहना था सबसे कि that teach your children music, कि सब अपने बच्चों को इंडियन म्यूज़िक सिखाएं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है, इंडियन म्यूज़िक, अपना ट्रेडिशनल म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसको वेस्टर्न कल्चर भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है और अपना रहा है. Now, come to paragraph number 12, which is the most important paragraph in the chapter, क्योंकि जो long questions होंगे वो इसी paragraphs में से आएगा. In spite of having travelled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Damrao, as they remain for him the most wonderful towns of the world. Now, Khan Saab. Bismillah Khan was popularly known as Khan Saab. ही हैड ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. उन्होंने पूरी दुनिया घूमी थी, लेकिन उनके लिए सबसे पसंदीदा जगह थी बनारस और दमराव. बनारस जहाँ उन्होंने शहनाई सीखी थी और दमराव जहाँ पे वो पैदा हुए थे. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the US, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. Now, उनके एक स्टूडेंट थे जो यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोलना चाहते थे. अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे शहनाई पढ़ाई जाती है, और वो चाहते थे कि बिस्मिल्लाह खान वहाँ आएँ और उस इंस्टीट्यूशन के हेड बने. अब क्योंकि उनके स्टूडेंट को पता था दैट बिस्मिल्लाह खान डज़ नॉट वांट टू लीव बनारस एंड दमराव, वो उसी जगह पे रहना चाहते हैं. उनको वहीं के टेम्पल्स, वहाँ रिवर और वो पूरा एंटायर सिनेरियो जो बनारस का था, उन्हें वही पसंद है. इसलिए उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया दैट ही विल रिक्रिएट, मीन्स आर्टिफिशली ही विल रिक्रिएट द एंटायर सिनेरियो एंड एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस इन यूएसए. मतलब वहाँ पे वो मंदिर वैसे ही मंदिर बनाएगा जैसे बनारस में बने हैं, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वैसे ही आसपास का माहौल होगा, सो दैट बिस्मिल्लाह खान को पसंद आए और वो यूएसए में रहें. But Khan Saab, that means Bismillah Khan, asked him if he would be able to transport river Ganga as well. This line is very important. Khan Saab ने उस स्टूडेंट से पूछा कि तुम वहाँ टेम्पल्स बना लोगे, उसी तरह का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लोगे, पूरी आसपास का एरिया बिल्कुल बनारस जैसा बनाओगे, लेकिन क्या तुम रिवर गंगा को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर पाओगे? दैट मीन्स विल यू बी एबल टू कैरी रिवर गंगा टू यूएसए? Can you flow river Ganga to over there in USA? Later is he remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan."
While in Mumbai, I think of only Benares and the Holy Ganga. While in Benares, I miss the unique matha of Damra. Now, Bismillah Khan was a very down to earth person who only loved his country, his city, and especially his village where he was born. He says, whenever I am outside in any of the foreign country, I keep yearning. That means I keep missing, I keep fretting for my India. And when he is in Mumbai, he is constantly thinking of Banaras. और जब वो बनारस में होते थे तो उन्हें पूरे टाइम याद आती थी दमराव की और मत्था ऑफ दमराव, वो जगह जहाँ पे मोस्टली वो अपना भोजपुर चैता गाते थे. ओके, now come to paragraph 13. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally pay the Shehnai every morning at a Kashi Vishwanath temple. Now, the life of Bismillah Khan is a perfect example of Indian culture. इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज, मतलब हमारा जो इंडिया का बेसिक कल्चर है, जो हेरिटेज है हमारे, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है. क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. यहाँ पे हमारे कल्चर मिक्स्ड है. एक्चुअली यहाँ पे इतने सारे कास्ट हैं, इतने सारे रिलीजन हैं, इतने सारे कलर्स हैं, इतने सारे क्रीड हैं, उसके बाद भी हम यूनाइटेड रहते हैं, हम एक होके रहते हैं. दैट इज़ द बेसिक कल्चर ऑफ इंडिया. यहाँ पे कोई एक धर्म नहीं है, एक ज़ात नहीं है. एवरीवन इज़ फ्री टू वर्शिप, टू प्रैक्टिस हिज ओन रिलीजन. एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ पे यूनिटी के साथ रहते हैं. और दैट इज़ क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ. कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है ये चीज़ बिस्मिल्लाह खान की लाइफ से? बिकॉज ही, being a Muslim, used to play Shehnai in the temples, and his family also used to play Shehnai in the temples, being Muslim. So this, his life and his family, reflects a clear example of India's cultural heritage, that is unity in diversity. Now, Ustad Bismillah Khan passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. Ustad Bismillah Khan unfortunately died on August 21, 2006 after a prolonged illness. Prolonged illness means किसी लंबी बीमारी की वजह से वो नहीं रहे. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. He was given a state funeral. All the religious leaders and people gathered at his funeral, and at the same time one day mourning was declared by the government. Means एक दिन लोग शोक मनाया था लोगों ने उनके मृत्यु पर. Okay, so this was about the life of Bismillah Khan, and in the part 1 we had learned the life of Evelyn Glenn. I have given you all the question answers. Write it down neatly in your notebooks. Thank you.